We are live now and people are just joining us. So without further delay, so let me introduce all of you to our distinguished speaker of the day, Dr. Diksha Dave Madam. Dr. Diksha Madam, she is working as Assistant Professor, Department of Environmental Studies in a School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies, IGNU at New Delhi. She is MSc Gold Medalist and having PhD in Environmental Sciences from Mohanlal Sukhania University, Udaipur. And she has a rich experience of more than 15 years of teaching and research in environmental studies. She has authored several textbooks on environmental studies, and she is also having so many book chapters, research papers, and articles in various journals of national and international repute, and also having articles in the magazines for popular general awareness articles. She has also participated and presented her research work in several national and international seminars and conferences, and also invited as a speaker in various conferences, seminars, and workshops. And at IGNU, she is coordinating important programs like MSc in Environmental Sciences, MA in Sustainability Science, Postgraduate Diploma in Sustainability Science, Certificate in Solid Waste Management, and course on the Population and Sustainable Development. She is also the coordinator of MOOC program on Challenges to Sustainable Development, which is offered under SWAYAM platform. And her area of research, it includes waste management, ecology, and sustainability education. She is also a member of Institution Innovation Council at IGNU New Delhi. So with this brief introduction, now I invite Dr. Diksha Dave Madam for her deliberation. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Vartika. I would not call it a brief introduction. It's an elaborate one. Thank you. That's my humble submission that I am grateful actually to Microvita and Indian Botanical Society chapter. Thanks to Vineet Soniji. Thanks to you. It is always a pleasure to come to your alma mater and speak to your, I would not call them juniors, but yes, of course, our peers. So it is a mutual learning. So thank you so much. I would like to share my screen. Let me just know if it is visible to everybody. Can you all see it? Yes. Shall I make it full screen? Yes, Yeah, it is visible. Yeah. Okay. Fine now. So if agreed, shall I start my presentation? Yes, definitely. Okay. So participants, good evening and welcome to this session. Let us first of all discuss what all I have to communicate, and at the end then we can have a discussion if you have any doubt, any query, any comments on that. So let us talk about writing, something which is unique, because since birth we are told to speak. Writing is something which comes at a very later stage, but for us who are scientists who write differently, and whatever work we are doing, it is visible only. It is always said that how many papers, where have they been published, impact factors, and terms like that. So our utility in the research domain is actually, of course, because of the work we are doing, that comes at the forefront. But yes, writing is also very important. How we are writing, how we are collating the things, that is very important. So scientific writing is different, my dear participants. We write on WhatsApp, we write on Facebook, we write blogs, we are writing most of the times. But here we are concentrating on scientific writing. That is having different connotations, whether it is writing for science, writing about science, or writing scientifically. Maybe arts and humanities and commerce people, they say, yes, we write scientifically, following certain methodologies and certain setups, or it is reporting scientific observation. All this is true. When we write a paper, when we write a book chapter, when we write a review paper, it involves all that, because in some papers we are informing about our findings in the research, whereas in others it may be writing about some new phenomena that we are seeing all around. So that will be writing about science. Whatever the form we take, it has to be guided by certain features. It cannot be done casually.
It cannot be done informally. Otherwise, you must have heard the very dangerous verb that comes, that publish or perish. So definitely we don't want to perish. We want to survive. We want to publish. But then how to publish and how to see that it is, in lines. So there are different kinds of scientific writing. आप लोग सभी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, सब में कुछ ना कुछ आजकल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती है. साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मींस कोई ग्लोबल वार्मिंग की बात करेगा, कोई प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करेगा. ये होते हैं जनरल पब्लिक साइंस राइटिंग्स. सिमिलरली आप कोई चैनल लगा लीजिए साइंस से रिलेटेड, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्री दिख जाएगी कि कैसे जो है वो अमेजन के फॉरेस्ट जो है वो उसमें फायर्स लगे इन हाउ इट इज अफेक्टिंग द इकोलॉजी. देयर इज एकेडमिक साइंस राइटिंग, देयर इज जनरल पब्लिक साइंस राइटिंग. हम जो एस्पायरिंग पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या जो करंट पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जो बडिंग रिसर्चर्स एज वर्तिका मैडम हैज टोल्ड, हम क्या करते हैं बेसिकली, हमारा पर्पस है कि हम एकेडमिक साइंस राइटिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं. बिकॉज here in the slide you can see there is a difference in the purpose, in the style of writing, in the audience and the types. If you are PhD student or if you are MSc student, my advice to you is that focus on writing. Don't always think about that my research work is not complete. Just write. It can be for the purpose of science communication. आपका ऑडियंस दोनों में बहुत अलग होता है. जब हम पेपर लिखते हैं तो हमारे रिव्यूअर्स होते हैं, हमारे जो पेपर्स को स्क्रूटनी करेंगे, हमारा मेथोडोलॉजी चेक करेंगे, हमारे एनालिसिस को चेक करेंगे, सारी चीजें. लेकिन जब आपकी ऑडियंस नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, जनरल पब्लिक होती है, सो दैट इज नॉट एक्चुअली डन इन दैट पार्ट. देखिए, जो जनरल पब्लिक साइंस राइटिंग है वो साइंस का जर्नलिज्म आता है, मैगजीन्स में लिखा जाता है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, रिकवर हो रहा है, इस तरह की न्यूज लिखी जाती है, ओपिनियंस होते हैं, कमेंटरीज होती हैं. ठीक है, यहां तक हमने बात करी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग. लेट अस नाउ टॉक अबाउट academic science writing. Okay, because once you understand academic science writing, I assume that you will be in a position to write general public science writing also. If there is anything, you may ask in between also, no issues. If there is something which has to be commented there and then. इसके बारे में बात थोड़ा सा लास्ट में करेंगे कि राइटिंग का हिस्ट्री है ये, कि व्हाट इज राइटिंग. Now, we have been writing from class 2 and 3, write an essay, write a letter. So writing, the traditional view is that writing is something which will be evaluated, which will be seen, which will be checked, which will be marked. लेकिन आज हम writing की बात करते हैं तो writing कैसे एक process है. We will talk about it later on because I don't want you to be confused about different phenomena. Can I hear from any one of you whether I'm audible or clear? Not, of course, from Vineet ji or Vartika ji, from any of the students. Am I audible and am I clear? Am I audible? You are audible. Yes. Very well audible. Okay. Am I clear? Yeah, exactly. Very clear. Yeah. So there are different views of writing. One is the old and the traditional view, and the newer one is the new view, which says that writing is learned, writing is an unconscious process, writing has global and local intentions also. कुछ लोग सोच के लिखते हैं, कुछ लोग लिखते लिखते सोचते हैं. Both the aspects are true. Both can be possible, and it varies from person to person. Some people first of all make a draft in their minds and then they start writing. जो PhD students हैं वो लोग क्या करते हैं कि शुरू का 1.5 साल 2 साल they work और बाद में लिखना शुरू करते हैं. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं from day one से they start writing whatever they are experiencing, whether it is a field work, whether it is a laboratory work, they will collate the information and they will start making the points, they will start writing. So writing can be learned, writing is unconscious, writing can happen anytime, and writing is a process most of the times. It is not that you will be judged, एक पेपर लिखा उसको चेक किया, it is not like that. So there are different views and different connotations of writing.
why we are having this topic of discussion today, why we want to write, what would have happened if the previous researchers would not have written anything. It is for the communicating research, it means for the accumulating knowledge, it is for decision making, and it is for disseminating information. There were times, students, आज से करीब 15 साल 20 साल पहले भी क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च होती थी. At that time, these topics of discussion were not given due importance. The researchers studied about ocean acidification. They also studied about the melting glaciers. They studied about the high temperature variations are occurring across the globe. But it is because of the written material at that time that we are able to compare today. Those researchers are not today with us, but their work, their writings, and their findings are with each other, with us. And therefore, it is very, very important feature that writing is important because it does so much things. It helps in so much ways to the scientific community for enhancing their knowledge. But what is written over here is that it will all happen when it will be published. You may be doing excellent work in your field. You may be arriving at fantastic recommendations for policy making, but it is of no use unless and until it is published. And that is why we all are here to see that how we can write so that it is published. What do we lack in our writing? There are two types of students. One who know the scientific methodology, who are very eager to experiment. They do all sorts of research, but they fail to make it known to the scientific community. And there are others who do very nominal work, but they write so well that it is communicated not just to the scientific community, but for the common people, to government, policymakers, planners, and to everybody. So that is very important, that publishing is very important. And the research has said that why articles are rejected. If you look into the studies which have been done on this, it is not because review में कोई problem है, methodology बिल्कुल ठीक होती है. Of course, there is some addition to the body of the knowledge, whether it is if you are the botany students, it may be change in the plant, it may be change in the location, geography, this and that. But most importantly, the articles are rejected because they are not written appropriately. Not written appropriately means कि जो guidelines हैं उसके according they have not been written. Something which is required is missing in those articles. So many times ये होता है कि editors, reviewers उसमें comment नहीं करते हैं, directly आपके paper को reject कर देते हैं. अगर उनको आपके पेपर में लगता है कि गाइडलाइंस मैच नहीं हो रही हैं, ठीक नहीं है, पढ़ने से पता चल रहा है, तो वो उसको वहीं के वहीं दे just reject without communicating you the reasons, in spite of the fact that you have done so much of good work in that particular area. चलिए अब हम पढ़ते हैं कि साइंटिफिक राइटिंग जो है उसके फीचर्स क्या होते हैं. The slide is visible to everyone. Yes. So it has to be structured. These are words which we will be seeing through examples. पहले आप इसको देख लीजिए. It has been structured. Abstract, keywords, introduction, methodology, scope, importance, analysis, findings, recommendations, conclusions, references. There is a fixed structure. You cannot move this way or that way in a scientific writing. It is not informal writing. It is evidenced. It has to be supported with the previous work which has been done on that area. It should be critical. It should also, it should not be like only, कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज पे काम कर रहे हैं, we are just sharing whatever has been done earlier. But you have to, the author also must be in a position to comment. You have to be critical about the work being done earlier and what you feel and what are your findings. It should be precise. Lambi kahaniyan, unnecessary words is not considered good. It should be balanced. It should not evoke any kind of controversy. It should not deviate totally from the topic. It should be objective and it should be formal. The words, the selection of the words, the style,
whether it is the passive voice, what kind of issue. You are not supposed to write I did this, we did this, but it has to be in a certain manner, which is guideline. So yes, can you see this? Yes, ma'am. देखिए, dengue is a major global problem in many parts of the world, causing epidemics throughout the developed and the developing countries. हम ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको साइड करते हैं. In Thailand specifically, frequent outbreaks in all administrative provinces of Thailand due to favorable vector breeding conditions and this and that, और ये सारा चीजें. When you look at this paragraph, do you think that it is, do you feel that it is scientifically correct? It is written properly? Yes, because it has years, it has the author's name, and it has the good selection of the verbs. इसमें देखिए जो टर्म्स लिखे हैं, हाइपर एंडेमिक नेचर ऑफ द वायरस, फेवरेबल वेक्टर ब्रीडिंग कंडीशंस. These are the proper scientific terminologies which you should write, which must be there in your paper. You cannot write general words. You cannot just say, for example, in this particular example, you cannot say that due to favorable conditions and specific nature of the virus, because virus is present only in that area. ये लिखने की बजाय अगर आप लिखोगे हाइपर एंडेमिक नेचर ऑफ द वायरस, दैट शोज दैट यू आर साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग, you know the terms. सही वो तब भी होता अगर आप ये कहते कि it is found only in that place, but it appears that you are writing in a layman terms and you have missed out the important words which are there. So that is very important, that you selection of the words related to your work is very important. अब जैसे इस पैराग्राफ को देखिए, while the studies in table 1 have employed both quantitative and qualitative methods, all were observational. An observational study may well reveal data. However, अब ये जो highlighted sentence है वो author कह रहा है. However, an observational study is incapable of ruling out potential non-linguistic factors. So that this way your communication should come. कहीं पे आप जो previous काम है उसको दिखाते हैं, कुछ बताते हैं, फिर आप अपना what is your observation, what are your findings. This is the meaning when I said that it should be critical. Critically सही होना चाहिए. इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में प्रिसिशन की बात की गई है कि जब आप कह रहे हो कि ऑक्यूपेशंस ऑफ द 4 मेजर कास्ट वर स्पेल्ड आउट अकॉर्डिंग टू दिस, द ब्राह्मण्स वर हाईएस्ट. व्हाट डज इट मीन हाईएस्ट? क्षत्रिय सेकंड, वैश्य, शूद्र बॉटम. ये वाली इस तरह से जो चीजें लिखी जाती हैं, कई बार हम ये करते हैं, अज्यूम करते हैं कि द पर्सन हु इज रीडिंग द टेक्स्ट ऑलरेडी नोज, बट इट शुड बी spelled out very clearly. You cannot write simply first, second, highest, lowest. It has to be explained at every stages. Then it is important to have आप समझते हो comprehensive. When do we say it is comprehensive? Anyone? What is the meaning of comprehensive word or comprehensive text? What is the meaning of comprehensive? Yes, anyone can reply. So comprehensive means that it is pinpoint. It has both, means clarity of information, and along with that all the required points have been given. So there has to be scientific objectivity, mathematical plainness. We will talk about what is mathematical plainness. Is that sometimes it is very essential for us to see okay,
जब मैथ्स की जहाँ पे बात आती है ना, जहाँ फिगर्स की बात आती है, जहाँ पे नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लोराइड केसेस और फ्लोरोसिस हैपनिंग इन सर्टेन विलेजेस, तो वहां पे आपको सिंपली सेइंग कि हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स वर फाउंड टू बी हैविंग फ्लोरोसिस, that will not serve the purpose. You have to be specific about the number which you are referring to. So mathematical plainness means simply rounding off the figures in your research will not help if you are addressing a particular problem. फिर right choice of words and sentences का बहुत जरूरी होता है कि on account of, due to the fact, उसको बोलने के अच्छा है हम because कह सकते हैं. Organization should be very proper and ambiguity must be avoided. कि कोई भी sentence जो है it should not contradict each other, it should be clear. जैसे पहले वाले example में हम देख रहे थे कि it was ambiguous, what is highest, what is lowest, what is first, what second was not clear. So when you plan to write a paper, suppose you are planning to write a paper or a book chapter, there are different stages that how do you begin your writing. So the first stage is pre-writing, because we do not start writing just like that. At that stage we are organizing our thoughts, we are thinking, we are creating a roadmap in our minds that what will go, which journal first of all you will select, and out of that then you will write a draft, then you will revise, edit, and then publish. It is not that simple as it appears to be here. It is not like that you will think about something, then the very next day you will write, the third day you will revise, fourth day you will edit, and fifth day you will be able to publish. It is not like that, because it is believed that the pre-writing stage takes the most of your time, because we are working on multiple dimensions in our research. So whether we are concentrated on a particular dimension or you want to mix all those things, so that will come into your pre-writing stage. Writing itself takes time, then you revise, you edit, and then you publish. But let us see what is the general. ये आप सब ने देखा होगा, जरूर देखा होगा, क्योंकि हम सब पेपर्स बहुत बात करते हैं. टाइटल होता है, टाइटल लिखने में लोग 2 सेकंड भी नहीं लगाते हैं. हमसे कहा जाता है कि टाइटल क्या होगा या पेपर लिखिए, तो टाइटल तो हम विद इन फ्यू सेकेंड्स मतलब हम लिख लेते हैं. एब्स्ट्रैक्ट लिखना कौन सी बड़ी बात है, ज्यादातर 250-300 वर्ड्स का होता है एब्स्ट्रैक्ट. सो उसमें क्या है, लिख लिया जाएगा. कीवर्ड्स तो और भी इजी है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस. We don't know what is the importance of keywords. अगर आप कीवर्ड सही लिखोगे तभी वो सर्च इंजन शो करेगा आपका पेपर, तभी वो साइट होगा, और तभी आपका जो है वो इंडेक्स बढ़ेगा. देन द मेन टेक्स्ट आता है, उसमें आप थोड़ा बहुत टाइम लगा सकते हो, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट और डिस्कशन, कंक्लूजन भी इजी है, एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं, रेफरेंस सब वेरी इजी. सो इफ यू लुक इनटू दिस, आपके लिए क्या मुश्किल है, खाली इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, मेथड्स आपको पता ही है, स्टैंडर्ड मेथड से ही हम लोग काम करते हैं. Results you know because you have already done the work, but then discussion. But now let us see what is desirable. अगर इतना easy होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो हम सभी बहुत अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स में बहुत इजीली पब्लिश कर लेते. बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो. फॉर दैट वी मस्ट नो. नाउ टाइटल. कई बार टाइटल में लोग एब्रीविएशंस लिख देते हैं, कई बार टाइटल में लोग स्टडी एरिया मेंशन कर देते हैं, कभी कभी हम बहुत लंबा एज अ सेंटेंस फॉर्म में हम टाइटल लिख लेते हैं. Municipal waste management and its impact on the flora and fauna of so and so municipal area. आपको उसमें म्यूनिसिपल वेस्ट बता दिया, फ्लोरा फौना डाल दिया, इम्पैक्ट डाल दिया. इट विल कंफ्यूज, नोबडी विल रीड. पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है मेनी टाइम्स, कि आपका पेपर सिर्फ आप ही पढ़ते हो. At many times it happens that we are the only reader of our papers and chapters and articles. So do this exercise today if you have time. कम से कम किसी भी आपके जो भी आप एरिया है उससे रिलेटेड आज टाइटल लिखने की कोशिश करिए. क्रिस्प सा अच्छा टाइटल, अनएम्बिगुअस हो, स्पेसिफिक हो और कंप्लीट हो. उसमें एब्रीविएशंस मत डालिए, टाइमलाइन मत डालिए, इफ नॉट पॉसिबल स्टडी एरिया मेंशन मत करिए. वी आर इन द एज ऑफ डिजिटल राइटिंग.
अब तो पहले जैसे इन आवर टाइम्स वी हैव परचेज रजिस्टर्स एंड वी हैव रिटन चैप्टर्स. नाउअडेज यू आर टाइपिंग, उसमें आपका स्पेल चेक भी आ जाता है, आपको हर तरह से हेल्प मिल जाती है इन द डिजिटल राइटिंग. और इन टुडेज वर्ल्ड कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम भी जब हमसे कोई चीज कहा जाता है कि लिखो, तो हम सबसे पहले गूगल स्कॉलर में जाके उसको निकालने की कोशिश करते हैं. तो दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द कीवर्ड्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली लोग क्या करते हैं कि जो कीवर्ड में मतलब वही जो टाइटल में आया है वही वर्ड्स आ जाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइटो रेमिडिएशन डाल दिया, या फिर आपने बैक्टीरिया डाल दिया, या फिर आपने इम्पैक्ट डाल दिया. सम वर्ड्स व्हिच आर टेकिंग, हाउएवर इट इज नॉट गुड. डोंट मेक इट टू जनरल, डोंट मेक इट टू नैरो, एंड ट्राई योरसेल्फ. कैसे ट्राई करोगे? आपने टाइटल लिखा ना अभी एज एन एक्सरसाइज, यू हैव रिटन सम टाइटल. अब आप उसके कीवर्ड्स लिखो, और वो कीवर्ड जो आपने लिखे हैं वो डाल के देखो गूगल स्कॉलर में. जब आप ये करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको जो पेपर चाहिए वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. अगर वो नहीं आ रहे हैं, पॉल्यूशन वर्ड्स डाल दिया अगर कीवर्ड में, तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पॉल्यूशन तो इतना, इट्स सच अ कॉमन वर्ड, यू विल बी लॉस्ट. 6 months में भी आपका पेपर खत्म नहीं होगा इफ यू गो लाइक दैट. सो यू ट्राई दिस. सो व्हाट इज द ट्राइंग मैकेनिज्म? दैट यू टेक अ कीवर्ड, सर्च इंजन में जाके डाल के देखिए, अगर आपको जो जो पेपर्स चाहिए वो निकल के नहीं आ रहे हैं, और कुछ ही निकल के आ रहा है, बहुत सारा निकल के आ रहा है, दैट मीन्स योर कीवर्ड इज नॉट करेक्ट. ना हाउ डू आई चूज माई टॉपिक? ये कंडीशन कब आती है चूज अ टॉपिक? जब आप जनरल लिख रहे हो, यू आर नॉट फॉर योर पीएचडी का, तो थीसिस का अगर है तो आपको पता है कि भाई मेरा टॉपिक क्या है. बट समटाइम्स एज आई सेड यू आर राइटिंग फॉर ऑन वेरियस डायमेंशंस ऑफ योर वर्क. सो हाउ टू चूज अ टॉपिक? बड़ा टॉपिक, उसको नैरो डाउन करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओरिजिनल सोर्सेस देखिए, फिर स्टेटमेंट लिखिए और आउटलाइन बनाइए. ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. इट ऑल्सो डज नॉट टेकन विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई कि हम टॉपिक चूज कर लें. दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. हम अपना, इसमें कई सारी चीजें हैं, बिकॉज ये दिस विल टेक अनदर सेशन कि हम कैसे टॉपिक डिसाइड करते हैं. मींस हमारा टाइम कंस्ट्रेंट देखना होता है, फिजिबिलिटी, टूल्स हैं, मेथोडोलॉजी है, फाइनेंस इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से आप काम कर रहे हो तो उसका. तो दिस इज टॉपिक रिलेटेड टू योर पीएचडी, टॉपिक रिलेटेड टू योर वर्क. दिस वेरीज, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉपिक क्या चूज करो, दैट मेक्स द होल डिफरेंस. Then you make the roadmap. Roadmap means what अलग अलग तरह की research है, whether it was your laboratory work, whether it means that you have to do some kind of a comparative analysis, or it requires you to indulge in certain work in certain specific time of the year. तो ये सारा रोड मैप बना के ही आप जब फील्ड में हो तो फिर आप लैब में नहीं रह सकते. लैब में है तो that type of things actually should come in your road map. बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट होता है पब्लिकेशन में आपका टाइमलाइन डिसाइड होना. टाइम बाउंड चीजें हैं. you cannot wait till eternity for writing something. So that kind of roadmap is very very essential for you to make. And then you create outline, you research, you brainstorm, you organize, you order, and you label main headings. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट्रो भी, जैसे हमने मेन चीज तो हमने पढ़ी ना कि इंट्रो होता है, फिर आपका मेथोडोलॉजी, एनालिसिस, डिस्कशन आता है. इंट्रो में भी फिर आप ये देखिए कि आप उसको कैसे, हाउ कैन you can cut into several parts. The introduction, the methodology also can be divided, and this is all your drafting. The drafting of the paper is going on. If you submit with all these to any journal, they will reject it immediately. ये सारा काम बैकग्राउंड हो रहा है जहां पे you are just trying to structure your paper. So after this you write conclusion में जब आप लिखते हो तो आप ग्लोबल स्पेसिफिक कंक्लूजन लिखिए. कुछ रीजन वाइज, रीजन अगर स्पेसिफिक स्टडी है तो रीजन स्पेसिफिक कंक्लूजन्स के साथ आपको थोड़ा सा उसका इन वन सेंटेंस एटलीस्ट उसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, या बाहर वर्ल्ड में उसका क्या कंटेक्स्ट है, वो कर सकते हैं. फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स, फ्यूचर वर्क उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ पॉसिबल है कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट और समरी एक नहीं होता, प्लीज इसको हमेशा समझ के चलिए. आपका कंक्लूजन और एब्स्ट्रैक्ट, इट इज नॉट द सेम.
दोनों चीजें लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे थे वेरी फर्स्ट स्टेज में, उसमें हम क्या लिखते हैं कि योर वर्क, थोड़ा सा मेथोडोलॉजी, दिस वाज डन एंड दिस वाज राइट, वेदर इट इज कंक्लूजन, यू आर फोकसिंग मोर ऑन द मेथड एनालिसिस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको जजमेंट नहीं देना, आपको पर्सनली कमेंट्स जो है related to your work you don't have to write, because it is a scientific writing what we are focusing on. So you need not make any comment on any type of experiment or any type of work which is being done. ये थोड़ी सी चीजें हैं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि फर्स्ट वाला तो आपने देख लिया। सेकंड चीज क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको पब्लिश कर रहे हैं ना, तो आपके राइटिंग के बाद जो दूसरी स्टेज आएगी वो कोई इसको रीड करेगा, रिव्यूअर उसको रीड करेगा। तो जो रीडर है उसका कंटेक्स्ट भी आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, because you want somebody else to read it and then publish it, and then many others will read it. So write use of simple familiar short words. ऐसे वर्ड्स लिखिए जो कि कॉमन लैंग्वेज में यूज होते हैं। Think about Shashi Tharoor's writing and then you will imagine that how difficult it is to interpret. You may be good at so much. That is why I have written here, avoid sesquipedalian words. It means difficult words. ठीक है, तो ये जो वर्ड है sesquipedalian words, ऐसे वर्ड्स लिखोगे तो मुश्किल है। जार्गन्स मत यूज करिए। जार्गन्स का मतलब क्या होता है, जनरली हम पोएट्री नहीं लिख रहे। Your voice is music to my ears. You cannot write that. A visit to that forest was like a music to my ears. I enjoyed. You are not going to write that because it is a scientific paper. The earth, the planet is a stage. The world is a stage. It goes well with the literature, but here you are not going to write that. अगर ग्लोबल वार्मिंग बता रहे हो तो ग्लोबल वार्मिंग में यू विल राइट द टेम्परेचर्स आर राइजिंग. यू आर नॉट गोइंग टू राइट समथिंग दैट द अर्थ इज हीटिंग एंड बॉइलिंग एंड दिस एंड दैट. एंड अप्लाई फॉग इंडेक्स. फॉग इंडेक्स के बारे में जानिए. फॉग इंडेक्स एक होता है जो रीडेबिलिटी को चेक करता है. जब आपको अगर आपके सेंटेंस में अगर 10 वर्ड्स का कोई सेंटेंस है और उसमें 4 वर्ड्स अगर ऐसे आ रहे हैं जो कि डिफिकल्ट हैं, तो वो फॉग इंडेक्स जो उसका है वो बहुत हाई है. दैट मीन्स उसकी रीडेबिलिटी कम होगी. दैट इज एन इंडेक्स. उसका सॉफ्टवेयर है, आप अपना पूरा टेक्स्ट लिख के चेक कर सकते हो. कॉम्प्रिहेंसिव की बात करिए और राइट टोन. आई डिड दिस, I took the test tube, I went to the field, I surveyed. इस तरह के वर्ड्स हम नहीं लिखते हैं, पैसिव वॉइस में करिए. अब ये सेंटेंस देखो, फर्स्ट वाला पैराग्राफ देखो, ऊपर क्या लिखा है. The nitrogen concentration was high in January, bit lower in February, lower in March, lowest point in mid-July, then it is what this is. If you write this, आपने किया है, आपने नाइट्रोजन कंसंट्रेशन मेजर किया है, nobody is denying that. बट व्हेन यू आर राइटिंग, जो नीचे लिखा है वैसे लिखिए कि नाइट्रोजन कंसंट्रेशंस फ्लक्चुएटेड सीजनली. तो सीजनली जब लिखा तो उसमें जनवरी फरवरी मार्च आपका सब कुछ उसमें आ गया. सो इन योर मेथडोलॉजी, स्पेशली ये मिस्टेक कब होती है, जब हम मेथड्स लिखते हैं. मेथडोलॉजी में डोंट डिस्क्राइब एवरी स्मॉल डिटेल, वेदर इट इज अबाउट केमिकल्स, वेदर इट इज अबाउट फील्ड वर्क, वेदर इट इज अबाउट योर लेबोरेटरी सेटिंग. प्लीज डोंट डू. और ये देखो इस सेंटेंस में क्या कर रखा है. वाटर सैंपल्स वर स्टोर्ड, द सैंपल्स वर ट्रांसपोर्टेड टू द लेबोरेटरी, द सैंपल्स वर एनालाइज्ड. बार बार हम सैंपल कर रहे हैं. कभी वाटर सैंपल, कभी सैंपल, कभी सैंपल, कभी वाटर सैंपल. नो, सेम सेंटेंस को, सेम स्ट्रक्चर को बार बार मत लिखिए. जस्ट ये क्यों कर रहे हैं, 300 वर्ड्स का करना है ना एब्स्ट्रैक्ट, तो 8000 वर्ड्स का मैन्युस्क्रिप्ट देना है, बुक चैप्टर देना है, तो क्या करेंगे फिर आप उसको. सेम बीटिंग अराउंड द बुश, सेम थिंग्स यू आर राइटिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज देयर इज अ वर्ड रिक्वायरमेंट. मेथडोलॉजी अगर 200 वर्ड्स का लिखना है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अगर उतना लिखना है तो नहीं होता. ये मैंने अभी बात की थी कि फ्लावरी डिस्क्रिप्शन नहीं करना है आपको. आपका स्टडी एरिया है, इट मे बी वेरी ब्यूटीफुल, इट मे बी यू आर वर्किंग ऑन डल लेक ऑफ कश्मीर, यू वर्क, you go ahead, but please, here we are not interested in the aesthetics of the place where you are working. That is very important. Flowery description are generally not considered to be good. जैसे मैंने बताया duplication, ये वही वाली बात है जो हम generally करते हैं on account of, due to the fact that, because it happened. So simple because. If you write because, it serves the whole purpose कि आप जो है वो क्या कहना चाह रहे हो, वो सारी चीजें इससे clear हो जाती हैं.
दूसरा क्या होता है, हमारे वर्क में हम कभी भी स्टिक नहीं रहते हैं एक तरह के राइटिंग से। जैसे क्लाइमेट चेंज लिख रहे हो तो कहीं इस क्लाइमेट चेंज में सी और सी दोनों कैपिटल लिखेंगे, कभी हम जो है वो छोटा लिख देते हैं। तो मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड सी व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ द जर्नल। तो सी लेवल राइज में कहीं तो हम बीच में हाइफन देते हैं, कहीं हम नहीं देते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट में कई बार आपने ऐसे कर दिया, कहीं जैसे एग्जांपल दिया, कहीं कोई वर्ड बड़ा है, कहीं किसी चीज का आप एब्रीविएशन यूज करते हो, कहीं पे आप उसका फुल फॉर्म लिख देते हो। ग्लोबल वार्मिंग GW, कहीं पे आपने कहीं कहीं ई वेस्ट लिख रहे हो, कहीं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लिख रहे हो। तो वो चीज आपका जो है वो कॉमन रहना चाहिए। यस यशवंत जी वांट टू आस्क समथिंग, आई एम सो डिलाइटेड, प्लीज। Yashwant, you may on your mic and ask the question Yes, directly. yes, yes, yes. हाँ यशवंत जी, you can chat, you can type if it is possible, if it is not a long question. Please write the question in the chat box and then we can take it. We can take it at the end of the session may also can be done. Shall we do it at the end? Yeah. यशवंत जी हम बाद में इसको करते हैं, तब तक आप Type किसी कर और लीजिए। फाइल में टाइप कर लो। Yeah. So that these are some common things. अब citation सबसे important आता है आपका citation. Citation के बारे में आपने पता होगा ना कि अगर नहीं करोगे, वैसा का वैसा उठा लोगे तो plagiarized हो जाएगा. That you cannot do. अब कैसे लिखें, क्योंकि हम definition ले रहे हैं, method कहीं से ले रहे हैं. So citing work is important. Any words, definition, ideas, methods which are not yours, डेटा है वो आपने कहीं से लिया है तो आप उसको साइट करते हो. So it is important that you cite according to the material which you have taken, that is the meaning here. And इसमें क्या आप अपना साइट कर सकते हो, आपने अगर फील्ड वर्क किया है एंड यू हैव गॉन एंड यू हैव कलेक्टेड, उसको साइट करने की जरूरत नहीं होती है. और जो कॉमन चीजें हैं वो साइट नहीं होती हैं. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस यू नीड नॉट साइट, यू नीड नॉट गेट इट फ्रॉम समवेयर. तो ये तो जो है वो कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग की चीज है. तो क्या साइट करना है वो भी पता होना चाहिए कि साइट हम वो करते हैं जो कॉमन डेफिनेशंस हैं, डेटा है, कोई फिगर है आपने कहीं से लिया है, या कोई स्टेटमेंट है विच इज समथिंग विच इज वेरी न्यू, उसको आप साइट करते हो. आपकी लेबोरेटरी में आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, यू नीड नॉट साइट दैट, although the same methodology is being applied to other labs also, but here you are actually doing it na, so you need not cite that. Or whatever you are getting, whether it is in the form of graphs, whether it is in the form of some figures you are collecting, उसको cite करने का जरूरत नहीं है. और common सी चीजें उसको cite करने का जरूरत नहीं है, which is very very common, which we all know about. Now how to cite, देखो ये पैराग्राफ है, इसमें साइटेशन क्या होता है आपने देखा होगा, और ये सबसे ज्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है कि कैसे लिखें. सो आप जब आपका टेक्स्ट होता है, जो बॉडी होता है, उसमें आप ऑथर का नाम दे देते हो और साथ में ईयर दे देते हो. दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली आई एम टेलिंग यू बिटवीन साइटेशन एंड रेफरेंसेस. साइटेशन मीन्स with whatever you have taken from anywhere. So how will you cite it? It is not essential कि आप यहाँ पे जर्नल का नाम दो, आप ऑथर का नाम दे दो और ईयर दे दो. ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जनरली पीपल लुक फॉर द रीसेंट साइटेशंस, दे डोंट वांट द ओल्ड रेफरेंसेस. और नीचे जो है वो रेफरेंस दिया गया है. रेफरेंस में देखिए इसमें बहुत दीज आर द ऑथर्स, this is the year, this is the title of the paper, this is the journal, this is the volume and these are the pages. ये एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें ऑथर का नाम आता है, ईयर्स आते हैं, आफ्टर दैट देयर इज the title of the paper, the journal, the volume and the page. That is the APA style of writing. Now the citations can be कई papers. If you are in the habit of reading research papers of foreign authors of various, you will find there are different methods where which you will find the articles.
सबसे कॉमन इज नेम एंड ईयर सिस्टम विच वी जस्ट सॉ. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वन ऑफ द लीडिंग एंड ग्रोइंग सोर्सेज ऑफ इंक्रीजिंग प्लास्टिक पोल्यूशन इज द पैकेजिंग यूज्ड इन डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स थ्रू ई-कॉमर्स. This has been cited by Mutha, work done in 2006. सेकेंड सेंटेंस में these are the two different examples. ठीक है, इन एग्जाम्पल्स में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो तरह का साइटेशन है जिसमें ऑथर का नाम आता है और उसके बाद कॉमा लगा के ईयर लिखा जाता है, और जब इसको रेफरेंस में लिखोगे तो मूथा ईयर करके पूरा उसका पेपर का नाम, जर्नल का नाम, वॉल्यूम वगैरह सारा डिटेल्स हमको देना होता है. अगर आपका जो रिसर्च पेपर है उसमें अगर 15 साइटेशंस हैं तो 15 ही आपके जो है वो रेफरेंसेस भी होने चाहिए. यू शुड नॉट मिस एनी. देन एक होता है अल्फाबेट सिस्टम का. अल्फाबेट सिस्टम में आपने कई बार देखा होगा कि रेफरेंसेस में ऑथर का नाम वगैरह नहीं होता, नंबरिंग होता है. 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग होती है. When you, I'll just read your question, we will do it afterwards. Okay, so इसमें जैसे लिखा है कि अमोनिया स्टिमुलेट्स olfactory nerve 2, तो the references are arranged in alphabetical order A B C D like that. फिर उसमें 2 है तो 2 you will refer to here that this is the author who has done this work. So one is the name and the year system, another one is alphabet system. Another one is citation order system where the references are listed according to the order in which they are appearing in the text. So first I have first, फिर first देखोगे तो reference में first को देखिए, second, third, fourth, fifth like this, not on the basis of the alphabet. तो ये different तरीके हैं, लेकिन generally हम sciences में जो है वो, because we are in the science writing, so it is generally the APA style and it is generally the name and the author side. तो ये documentation है, जैसे आपने देखा होगा, sorry, this is APA which is American Psychological Association, that is for education, psychology and sciences, and MLA is for humanities, Chicago is for business. Just make it a correction here. So ये आपने, do you know about these terms? हम कई बार लिखा होता है ना APA style of उसमें देना है, कहीं पे MLA style of देना है. तो generally because in our sciences it is basically the APA, American Psychological Association वाला documentation जो हम follow करते हैं, उसमें author है, फिर year आपका brackets में year है, and then the whole chapter, that is a fixed and this makes your paper or your work look scientific, interesting, up to date. This is very important part. Referencing is very important, and it shows that you have consulted so many research papers before bringing this here. So इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, then you will be able to do it nicely. ये कुछ examples I just brought. देखो जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें क्या है, ये इसको रीड करो. The growth in environmental according to phenomenal, the review, this पूरी कहानी लिखी, और इसमें एक्चुअली किया गया है कि 100 कंपनीज के 11 एनवायरमेंटल वेरिएबल्स पे स्टडी किया है. कंपनीज का स्टडी है कि वो एनवायरमेंटल कंप्लायंस उनका कितना है. तो 11 वेरिएबल्स ले लिए, चाहे वाटर ट्रीटमेंट हो या वाटर हार्वेस्टिंग है, वेस्ट है, ये सारी चीजें. इसको देख के कहीं से नहीं लग रहा कि ये रिसर्च, इट डजंट सीम टू बी, बिकॉज देयर आर नो रेफरेंसेस, नथिंग हैज बीन गिवन. इधर आपका जो है वो फिर सम रेफरेंसेस हैज बीन गिवन. देखो व्हाट वी आर फाइंडिंग डिफरेंट हियर, व्हाट इज द डिफरेंस, कि ये पूरा पैराग्राफ जो है वो जब आप इस तरह से रेफरेंस फॉर्म में दे देते हो लास्ट में, जनरली लोग ये करते हैं, नोविस जनरली डू दिस. हाउ डू आई नो विच सेंटेंस? अब जैसे सेकेंड लाइन है, द रिव्यू ऑफ द प्रायर रिसर्च शोज, इसका रेफरेंस है कि ग्रोथ इन एनवायरमेंटल अकॉर्डिंग रिसर्च है, उसका रेफरेंस है? वी डोंट नो, एंड जनरली वी टेंड टू डू दिस. तो ये इस तरह का मिस्टेक्स प्लीज मत करिए. इसको देखिए, जॉन एंड जीन 2007 में जॉन एंड जीन्स, ये लिखने का तरीका गलत है. एवरी टाइम यू कैन नॉट राइट दिस, ऑल्दो इट इज रेफरेंसिंग हैज बीन गिवन. देखो रेफरेंसिंग का भी मतलब होता है कि कई बार ये होता है कि हम एक पेपर पढ़ते हैं, उस पेपर में हमें हमसे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है विच वी वांट टू यूज, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू विल राइट इन दिस वे, ऑल्दो यू विल मेंशन इट, बट दिस इज नॉट. आप उसको जानते ही नहीं हो ना, जॉन एंड जीन थोड़ी आप लिखोगे, जॉन एंड जीन्स अप्रोच थोड़ी आप लिखोगे. You will just write that this approach may not be suitable, हो गया, खट फिर ब्रैकेट में.
So that is the scientific way of writing. So this is way it should be written. The authors करके कर सकते हैं. The approach, the authors, because we are referring to. ये generally काम आता है जब PhD students हैं, जब आप review of literature वाला chapter लिखोगे, then it will help you, and then it will be required that how you are going to see this. जनरली जो पहला वाला तरीका है वो अच्छा नहीं माना जाता है जब हम ये लिखते हैं कि this found that cowbird nesting use host offspring to procure more food. The other way around should be the cowbird nestings use host offsprings to procure more food. ब्रैकेट में आपने वो दे दिया है. आई होप आई एम क्लियर बिकॉज आई डोंट. अच्छा, दूसरी बात ये याद रखिए कि साइटेशन सबका दिया जाता है बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम. आई हैव नॉट इंक्लूडेड मच, लेकिन अगर आप ये वाला लेक्चर को भी अगर कहीं साइट करोगे तो उसका भी एक स्टाइल है. यूट्यूब वीडियोस भी आप देखते हो, उसको साइट करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है. फोटोग्राफ्स लेते हो, साइंस के एग्जीबिशन में जाते हो, कोई फोटो लिया है, आर्काइवल मटेरियल लेते हो, व्हाटएवर. पीपीटी भी हम किसी का लेते हैं, कोई पीपीटी में कोई डायग्राम हमें दिख गया, कोई फ्लो चार्ट दिख गया, इफ यू आर यूजिंग इट इन अवर बुक, इन अवर चैप्टर, इन अवर प्रेजेंटेशन, दैट कैन आल्सो बी साइटेड. तो जैसे कॉन्फ्रेंस पेपर्स तो हम लोग जनरली वी आर इन राइटिंग, तो कॉन्फ्रेंस पेपर्स को कैसे लिखा जाता है, उसमें कॉन्फ्रेंस का प्रोसीडिंग्स का नंबर आना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज जैसे गवर्नमेंट के पॉलिसी डॉक्यूमेंट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, यूएन की रिपोर्ट्स हैं, हमारी नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं. जनरली जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, सेंसस की बात करते हैं, ये सारी चीजों में तो हम गवर्नमेंट पॉलिसी को ही मान के चलते हैं ना. वी यूज दैट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आजकल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं, हमें सब कुछ मिल जाता है ना. हम बुक्स देखते हैं ना हम पेपर देखते हैं. ऑनलाइन मटेरियल को साइट कैसे करो. न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में कोई चीज आती है, दैट इज आल्सो ऑथेंटिक, उसको हम कैसे साइट करो. अगर ऑनलाइन आपने कोई वेबसाइट पे चीज कोई देखी है, एंड इफ यू आर साइटिंग दैट, देन व्हेन इट वाज लास्ट एक्सेस्ड, कब आपने एक्सेस किया, उसका डेट भी आपको देना होता है, यूआरएल देना होता है. दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू टू डू योर वर्क साइटिंग. अब आपने लिख लिया है सब कुछ, हमने साइटेशन और रेफरेंसेस तक हम आ गए, बट देन यू हैव टू एडिट. पहला रीड अपना मैन्युस्क्रिप्ट का करो तो मीनिंग के लिए करो. whatever you are trying to convey, whether temperature, precipitation relationships दिखा रहे हैं या impact of microbial activity दिखा रहे हैं, वो मीनिंग कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फर्स्ट आप ड्राफ्ट वो पढ़ के करिए. दूसरी बार जब आप उसको ठीक करो, सेकेंड टाइम व्हेन यू विल रीड, इट इज फॉर द ऑर्डर, इंट्रो, मेथड, ये सारी चीजें. और थर्ड जब रीड करते हो तो वॉइस, लैंग्वेज, कन्वेंशंस, ये सब ठीक, ग्रामर, स्पेलिंग्स, ये सारी चीजें. तो एडिटिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये कुछ चीजें हैं जो ऑथरशिप की बात आती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल के नीचे तो हम अपना नाम ही लिखते हैं ना. ऑथर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज बीइंग डन फॉर दैट. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑथर्स. देयर आर ऑनररी ऑथर्स, there are guest authors, there are ghost authors, there are gift authors. Who are honorary authors? MS Swaminathan has done a lot of work on agriculture. So if I am doing something great, I may request, sir, may I include your name? That is the honorary authorship. Because if he's convinced, for him a small piece of work on any given area will not question his scientific caliber, so that is the honorary. There are guest authors. They are guest authors because they are guests. It happens with RAs, it happens with many a times where I would not like to comment much, but yes, we may invite somebody and ask them to be. They have not read your manuscript, they have not contributed, but why then we are including? Because हो सकता है कि आपने उनकी लैब यूज करी हो, ठीक है, आपने उनका लैब यूज किया है, तो you want to give their name. So they are just guest. They are not directly related to your research work, लेकिन वो गेस्ट ऑथर हैं आपके काम में, क्योंकि उन्होंने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है या आपको प्लेस ऑफ वर्क दिया है. So they will be guest. There are ghost authors who have done everything but their name is not mentioned. That is why I specifically said, because जब स्टूडेंट्स होते हैं शुरू में, तो they help their PhD guides in writing, क्योंकि तब वो सीख रहे होते हैं और हम ये कहते हैं अभी तो तुम सीख रहे हो तो तुम सीखो. तो सीखने के लिए जब हम लिखते हैं तो हम घोस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा नाम कहीं अपीयर नहीं होता. बिकॉज वी आर लर्निंग हाउ टू राइट, साइटेशंस, मेथोडोलॉजी,
And there are gift authors, which is very common with these guidelines that you have to compulsorily publish. तो गिफ्टिंग में तू मेरा नाम यहाँ दे दे, मैं तेरा नाम वहां दे दूं, तो इस तरह की जो गिफ्टिंग होती है ऑथरशिप में, तो दिस ऑल्सो टेक केयर ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स ऑल्सो इन राइटिंग, बिकॉज अल्टीमेटली ये सारा आपका हो रहा है. डिजिटल राइटिंग की बात की थी लास्ट में, बस ये जस्ट 1 or 2 स्लाइड्स रिमेनिंग. फायदा भी है, नुकसान भी है. डिजिटली जब हम लिखते हैं तो यस इट इज सेव्ड, इट कैन बी सीन आफ्टरवर्ड्स, बट इट इज अ हिंड्रेंस टू मेनी जो लोग ओरिजिनल थॉट प्रोसेस से लिखते हैं मेनी टाइम्स, बिकॉज देन यू आर कॉट अप बिटवीन द कीज एंड ऑल. Otherwise, when you're writing in a flow, it is different. So for you, because we are in this age, and you need to have separate files. मतलब पूरे चैप्टर का एक फाइल मत बना दो, इंट्रो का अलग फाइल बनाओ, रिव्यू का अलग फाइल बनाओ, मेथड का अलग फाइल बनाओ, उससे रिलेटेड उसमें पेपर्स डालो, लिंक्स डालो, then you will see how your work will come out, because it has to be systematic. And one of the major hindrance is that digital literacy on compatibility. सबकी नहीं होती है, नेट नहीं आता सब जगह, ठीक है, प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स नहीं है, जर्नल्स नहीं है, एक्सेस नहीं है. सो ये सारे कुछ डिजिटल राइटिंग के फीचर्स हैं. सो नाउ वुड आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ राइटर आर यू? यू ऑल आर राइटर्स. You are a planned drafter, a writer as you think as you write, rewrite, or a procrastinator. And writing is, अभी लिखने को बोलेंगे तो हम 90% we are just staring कि हम क्या लिखें, चाहे टाइटल की बात हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट की बात हो, वी आर लॉस्ट. बट देखो कुछ लोग होते हैं जो प्लान्ड ड्राफ्टर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो राइटर एज यू थिंक राइटर, क्योंकि जब हाँ जैसे होता है ना, यस आज हम लिखेंगे, वीकेंड पे हम लिखेंगे, दैट मीन्स यू आर इन द टोन वेयर यू विल बी राइटिंग. देयर आर सर्टेन अदर्स, फॉर देम द थॉट्स कम एंड दे स्टार्ट राइटिंग. यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस, यस और नो? देयर आर टू डिफरेंस. पहले हम सोच के बैठेंगे आज तो लिखना ही है, and there are others who can write whenever they are thinking, and another one rewrite, and procrastinator who never writes. So of course good writing is very challenging. Growth mindset is important. Writing is a skill, it's an important skill. मान के चलिए कि writing की अगर habit हो गई, you know, you should write daily. This is the mantra of success. कुछ भी लिखो, लेकिन अपना साइंटिफिक एक पैराग्राफ प्लीज राइट, व्हाटएवर लैब में आपने किया है, whatever work you have done, just keep this habit of writing, and you will notice the change within 6 months, that how you're writing, your words, your style of writing has improved. So you generate content और copy audit, लेकिन आप साथ में दोनों काम नहीं कर सकते हो. एक परफेक्ट साइटेशन के चक्कर में शुरू में मत पड़िए, दैट इज अ ट्रैप, है ना. अपना you have to do your work, set smart goals of writing. It is not possible, as I said, कि आज प्री राइटिंग, राइटिंग, एडिटिंग, रिवाइजिंग, सबमिटिंग, एक वीक में पेपर हो गया. स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. You realistically say that writing an introduction will take me a week. राइटिंग रूटीन बनाइए. सबसे जो लोग थीसिस लिखने ही वाले हैं अभी, उनके लिए सबसे कंफर्टेबल चैप्टर जो आपको लगता है इन स्मॉल पीसेस में लिखिए. राइटिंग दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो विद दिस आई एंड. सो राइट अर्ली एंड राइट ऑफन. रोज लिखिए, because writing a 300 pages formidable task, but writing 2 pages daily is very easy. Repeat this 150 times and then you will have a fantastic book, and we are all here to read that book. So with this I end. I hope I'm able to communicate. Because of paucity of time, I have tried to include as much as possible, but yes, we need lot of all these aspects need separate sessions, whether it is citation or writing or the structure. So thank you so much, Vineet ji. Thank you so much, Vartika ji, for inviting me and giving me an opportunity to speak to you. Yeah. Yes, these are very important terms. आप यशवंत जी, impact factor, H index, I10 index, research index, यही सब सारी important चीजें हैं. Impact factor generally हम journals का देखते हैं, जिसमें the impact factor means average how many times the papers of the journal have appeared. So that will explain the impact factor. तो तभी हम कहते हैं कि what is the impact factor? If the impact factor is high, it is advisable to do this thing. The criteria for that depends upon the
The frequency with which the articles are published and how many people have cited their work. That is actually H10 index, जिसको हम कहते हैं कि अगर आपका suppose एक paper है, you have written some paper. If जैसे हम क्या बात कर रहे थे कि nobody reads that, so whether if how many citations you, how many people have cited your work in their own chapters, in their own research papers, so that gives a citation score. That is your H1 index. And how can I write a specific title for review paper? That depends upon what you are reviewing, है ना? What topic you have taken and what kind of review it is, whether it is a review of the historical timeline है या review है of within a 1 or 2 year what developments have taken place, so that kind of review है, whether it is a policy review, yes, there are EPRs and CSR and so many review policies being which have come up, तो उसका review, so that will depend upon what title you are taking. So it is very interesting, but the only thing is that yes, you have good mentors in the university and elsewhere whom you can consult, they will guide you. Yes, anything else? One more question is in the chat box from Ayushi Malik. If we modify slight changes in any method, then that should be cited. Yes. That has to be cited, whether you have changed the procedure, you have changed the methodology, or analysis may be, for example, generally questionnaire based जो research work होता है जिसमें question का Likert scale वगैरह हम use करते हैं. So if you have deviated, then you must have kept some research earlier work in your mind. तो अगर वो देख के किया है कि उस work में ऐसा किया था, accordingly you are sampling, you are doing, so that has to be cited, of course. Thank you. The questions are over now, and thank you so much, ma'am. And now it is the time for the official vote of thanks. And for this, I would like to invite Dr. Vineet Soni, sir, Head Department of Botany, Mohanlal Suparia University, and the brain behind this Indian Botanical Society Udaipur chapter. So over to you, sir. Thank you very much, Dr. Vartika. It was really very great and very informative session by Dr. Diksha Dave, madam. And madam, really, I have seen that more than 25 students, research scholars who are very much interested in the research. They attended your session, and you nicely described that how to write a research paper. And you described from title to the references, that how to write the title, how to write the abstract, how to write the keywords, how to select the keywords, and then introduction, material method, discussion. So you covered all the aspects for a excellent research or review paper. So it was really very excellent, not only for the research scholars, but also for the faculty members who are here. So, and मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा कि क्योंकि रिसर्च पेपर्स का आपने बताया और बहुत डेप्थ में आपने बताया कि कैसे ये रेफरेंसेस लिखने हैं, कैसे वो करना है, बस स्टूडेंट्स के लिए बस ये कि जो भी आप लिखें वो एकदम ईमानदारी के साथ लिखें, और क्योंकि क्वालिटी ऑफ जर्नल्स भी मायने रखेगा आपका यहाँ पे, जैसे मैडम ने बताया था, क्योंकि आजकल क्या है, गली मोहल्ले से बहुत सारे जर्नल निकलने लग गए बिना रिव्यू के, वो उनको दे जस्ट नीड द मनी, 500 रुपए दो और छाप देंगे, तो उससे क्या है, they are creating the pollution in the field of science and academics. So we should avoid this type of journals. So madam ने जो बात कही है, if we are writing our review or research paper in that manner, then our paper, you can publish your paper in a very good journal of high impact factor. जो मैडम ने कहा है उस तरह से यदि हम उसको फॉर्मेट के अंदर तैयार करेंगे. So many thanks, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीक्षा दवे मैडम, और really it was excellent session. और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दैट सून द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज 3-day वर्कशॉप ऑन साइंटिफिक कम्युनिकेशन. सो आप उसमें आए यहाँ पर, सो दैट द स्टूडेंट्स में डायरेक्टली कनेक्ट विद यू. थैंक यू सर, माय प्लेजर, थैंक यू सो मच. केशवन जी, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. shall I, you can write effective introduction, you take my email, the PPT will be shared to you, and anytime you can be in touch and you can discuss. Nothing from my side, always there for you. Thank you so much, ma'am. Yes, sir. Dr. Vartika, Dr. Savita Chahar madam, head of the department, Mira Girls College, and Professor S.K. Verma sahab, who is the president of your society, and
I'm thankful to the Honorable Vice Chancellor, Professor I.B. Trivedi, sir. And I'm thankful to all the faculty members of the Department of Botany and Mira Girls College. So thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. And we hope that in future also we get your guidance. Thank you so much, everyone, for joining. Thank you, all the participants. So let's Thank you, participants. Thank you, everyone.